हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं द आर्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड द सब टॉपिक इनसाइड इट अबाउट द प्रोपगेशन ऑफ द ईएम वेव्स। लास्ट सेशन में आई शेयर्ड विद यू अबाउट द टू सब पार्ट्स ऑफ दिस आर्टिकल। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करेंगे, और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपगेट करेंगे। So the lecture number 1 for this was focused upon how to generate the electromagnetic wave through the tank circuit, the LC tank circuit, जिससे हमें frequency of the EM wave मिल जाती है। और आज का जो सेशन है that is going to be focused upon the propagation of the EM waves. For just a hint of the knowledge to you, that it took almost a gap of 35 to 36 years between these two events, that is between the generation of the EM waves and the propagation of the EM waves. So the history itself is a little bit delayed, 36 years of gap. I'm going to focus upon the article of the energy carried by the EM waves and also the energy density of the EM wave. और हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि हम हमेशा EM waves को बोलते हैं as having an electrical component and a magnetic component. सो ऑब्वियस क्वेश्चन विच कैन क्रॉस अवर माइंड इज कि क्या इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक बिहेवियर जो होता है वेव में वो इक्वली कंसिस्टेंट होता है, या किसी एक का जो पलड़ा है वो थोड़ा भारी रहता है। दैट मीन्स इज द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट वेज ओवर द मैग्नेटिक कंपोनेंट और वाइस वर्सा, और आर दे सपोज टू बी इन द इक्वल कंपोनेंट्स, इक्वल प्रोपोर्शंस। क्योंकि हम नाम तो ईएम वेव बोल रहे हैं, ऐसा तो बोल नहीं रहे कि ज्यादा इलेक्ट्रिक है या ज्यादा मैग्नेटिक है। So let's explore these particular ideas. So we should be linking this with the previous session, previous lecture. So I'm going to start the article once again with the article of the frequency, where we understand कि हमने क्या करा है, एक disturbance को create करा है मीडियम में by generating a tank circuit, जिसके अंदर हमने एक चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेट करवाया through the LC circuit, जहां पर उस LC circuit की frequency was एज 1/√LC, जिसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, और अगर हम सिंपल फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, सो दैट्स इक्वल टू 1/2π into 1/√LC. And the same frequency is going to behave as a source for the EM waves. And so the EM wave is going to propagate in the medium with the same frequency as generated by this source, which is a tank circuit or the oscillating charge particle. Now that particular EM wave is going to move in the medium, and it is based upon two kind of oscillations. One is electrical oscillations and second is a magnetic oscillations, which means जब हम EM wave की बात करें तो उसके अंदर एक पार्ट इलेक्ट्रिकल वेव है, दूसरी पार्ट मैग्नेटिक वेव है। तो दोनों की हम इक्वेशंस को लिख लेते हैं। So while I'm writing the electric wave equation, that's equal to E naught sine of kx minus of omega t. This explains कि ये जो वेव है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है। X is supposed to be the direction of the propagation. अगर हमने इसको kx माइनस ओमेगा टी लिखा है तो बीच में माइनस है, which explains कि जो वेव है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, उसका जो मोशन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है। और अगर ये kx प्लस ओमेगा टी होता है तो इसका मतलब द वेव वुड बी ट्रैवलिंग टुवर्ड्स अ नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर ये ky माइनस ओमेगा टी होता है, इसका मतलब द वेव इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स अ पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये ky प्लस ओमेगा टी होता, so wave is traveling towards a negative y-axis. So x is the direction of the propagation. The electric field, as we discussed in the last session, is going to be along the y. And the good part is कि अगर हम magnetic field को लिख रहे हैं, that is B is equal to B naught, तो उसका amplitude different है, but it is having the same phase. और same phase के लिए हमने diagram को भी reconstruct करा हुआ है last session में। एक बार दोबारा से check on कर लेते हैं that if this is going to be the direction of the propagation of the wave, तो अगर हम यहाँ पे electric field oscillations बना लेते हैं, so these are represented as electric field oscillations, that is in your y-x plane, where oscillations are, electric oscillations are along the y-axis. और अगर हम यहाँ पे simultaneously magnetic field oscillations को भी sketch on कर लेते हैं, so let's sketch on that. So that's sketched on in this mannerism. So what we are able to see from this particular sketch, that at the particular instant जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू आ रही है, तो उसी पर्टिकुलर फेज वैल्यू पे देयर इज द मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो ये वैल्यू
बी नॉट आ रही है, मतलब इलेक्ट्रिकल एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक एम्पलीट्यूड जो है वो एक ही फेस पे ऑब्टेन हो रहा है। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंस्टेंटेनियस वैल्यू जीरो है, वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड की भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू जीरो आ रही है। सो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड जहां पे वैल्यू माइनस ई नॉट आ रही है, वहीं पे वैल्यू जो है वो माइनस बी नॉट आ रही है। सो इट एक्सप्लेन्स दैट दे आर सपोज टू बी इन फेस। So the electric wave and the magnetic wave propagate in phase. ओह, तो कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है, हाँ भाई इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल सकते हैं बिकॉज दे आर मूविंग इन फेस। हाँ, दोनों में जो एम्पलीट्यूड है वो फर्क है, बाकी सारा फीचर सेम लग रहा है। एक और चीज का फर्क है, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस आर अलोंग द वाई एक्सिस एंड द मैग्नेटिक ऑसिलेशंस इन दिस आर अलोंग द जेड एक्सिस। Great. Now, let's write down the expression of the speed from these equations. So, what are the equations we have written down? That is, E is equal to E naught sine of kx minus of omega t, and B is supposed to be equal to as B naught sine of kx minus omega t. From the solution of the Maxwell equations, we are able to write that the speed is equal to the ratio of the electrical amplitude to the magnetic amplitude, as simply as equal to E naught upon B naught. That's from the solution of the Maxwell equations. C को मतलब speed of electromagnetic wave को determine करने का एक और तरीका है, which is also based upon the electrical and magnetic characteristics. So let's explore the second idea also, where we can write the C as an expression as 1 upon root of म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये एक्सप्रेशन भी फिर से मैक्सवेल की इक्वेशंस के सॉल्यूशन से हमें मिलती है। नाउ दिस इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम, पर ऐसा तो नहीं है ना कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अब हमने बोला लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो अंडरस्टूड है कि हमने जब हर्स एक्सपेरिमेंट करा था तो इस बात के ऊपर हमने टिप्पणी कर ली थी, हमने इस बात को समझ लिया था दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड द लाइट वेव्स आर द सिमिलर टर्म्स। तो अगर हम बात करें स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द वैक्यूम, तो वो तो सी से डिनोटेड है, पर अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम से पास होती है तो वहां पे उसकी स्पीड जो है वो बदल जाएगी। कोई हमसे पूछेगा कि भाई क्यों बदली, सो रिमेंबर दैट इट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। रिपीटिंग अगेन, इट्स अ नॉन मैकेनिकल वेव विच मीन्स ये उस मीडियम की बल्क प्रॉपर्टीज पे डिपेंड नहीं करती है, मतलब डेंसिटी पे, प्रेशर पे, इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम पे, ऐसी टर्म्स पे डिपेंडेंस नहीं है। तो किस पे डिपेंडेंस है? दैट इज द इलेक्ट्रिकल एंड द मैग्नेटिक कैरेक्टर, मीनिंग द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एंड द मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ द मटीरियल पे डिपेंडेंट है of that particular medium, which means as it passes through a different medium, तो वहां पे जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है वो डिफरेंट है, विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम, और वहां पे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी डिफरेंट है, विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम, एंड सो द स्पीड ऑफ द लाइट वेरीज इन द डिफरेंट मीडिया। यहां पर इससे हमें मीडियम का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मिल सकता है। And what is the important character of the particular medium? That is a refractive index. Of course, इस term को हम optics में, ray optics में काफी ज्यादा use करते हैं when we talk about the refractions. So what is a refractive index? The refractive index of a particular medium with respect to the vacuum. Repeating again, there's a refractive index of a particular medium with respect to the vacuum is equal to the speed of the light in the vacuum upon the speed of the light in that particular medium, the c by v। ये वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा रहती है क्योंकि स्पीड ऑफ द लाइट जो है वो स्पीड ऑफ द लाइट इन एनी अदर मीडियम से ज़्यादा रहेगी। वैक्यूम में लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है, सो दिस इज ऑलवेज मोर देन 1। नाउ अभी हमारी जो रीसेंट नॉलेज बनी उसके हिसाब से सी को हमने स्क्रिप्ट डाउन करा है एज 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट को क्या बोलोगे? द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। तो सी क्या है? द स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम। एंड व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट एनी अदर मटेरियल मीडियम, तो वहां पे स्पीड ऑफ द लाइट को वी से डिनोट करें क्योंकि वहां पे जो म्यू है दैट्स द magnetic permeability of that particular medium, और epsilon जो है that is the electrical permittivity of that particular medium. Simple.
So now we are able to substitute these particular terms in the expression for the refractive index. Now, instead of C, I am able to write as 1 upon root of mu naught epsilon naught. And instead of the V, I am able to write as 1 upon root of mu and epsilon. Oh, that gives me something more interesting. कि भाई हमें यहाँ से मिल रहा है म्यू अपॉन म्यू नॉट का रेशो और मिल रहा है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट का रेशो. एंड ऑल ऑफ अस वी बेसिकली नो कि भाई ये रेशो किसके बराबर है. दिस बिकम्स एज रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर. बोले तो ये क्या टर्म्स हैं. म्यू आर इज नोन एज द रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और एप्सिलॉन आर को बोले तो दैट इज अ रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी माय फ्रेंड्स. दैट्स एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. Now this can be expanded, that can be expanded to the core property of the susceptibility, where the mu r can be written as equal to 1 plus chi, that is a magnetic susceptibility. And similarly, the epsilon r can be written as equal to 1 plus chi of electrical nature, that is electrical susceptibility. And that can also be basically written according to the dielectric constant, right? So I can write this particular term as equal to simply as 1 plus magnetic susceptibility into 1 plus electrical susceptibility. Anytime I also know that this particular term, that is a relative electrical permittivity, is also equivalent to the dielectric constant. What is K over here? It's behave as a dielectric constant. So this term can also be written as equal to 1 plus magnetic susceptibility and into K, that's a dielectric constant. So you can see that we can have a number of numericals turning off from here. Now, we have already seen that if we have the direction of propagation of EM wave assumed along this direction, that is, let's say along the x-axis. So what we learned that the electric field oscillations are supposed to be along this direction. That is the direction of the electric field oscillations. That's electric field oscillations. And if we actually work upon and see the magnetic field oscillations, so that's in this direction. So that's the direction of the magnetic field oscillations. So pretty much clear कि भाई जो भी तरीके की oscillation हो, चाहे electric field या magnetic field oscillations, that is perpendicular to the direction of the propagation, that explains that it is supposed to be transverse in nature, which was experimentally actually explained by the Hertz experiment, and it is proved through the Maxwell's equations also. So a EM wave is supposed to be a transverse wave in nature. Now, like any other wave, when we talk about any wave, we talk about two kind of things it carries, two kind of physical properties, physical quantities. What is that? Mass to carry nahi hota hai. No mass is associated with any wave. So what does it carry? It carries energy and momentum. So we are going to write up the expression for the energy carried by the EM wave. तो अभी जो energy carried by the EM wave है, तो भाई हम कितनी एनर्जी की बात करें, क्योंकि जो EM वेव है वो तो पता नहीं कहाँ तक जा रही है. इट्स मूविंग टू अ लॉन्गर डिस्टेंसेस, ट्रांसमिशन हो रहा है उसका. So rather than talking about the energy, we talk about the term as the energy density in a particular region. In a particular region in the sense कि हम ऐसा सोच सकते हैं कि मान लो कि ये डायरेक्शन है फिर से EM वेव प्रोपगेशन का, एंड दिस इज गोइंग टू बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशंस, and then we are talking about the magnetic field oscillations. So these are the magnetic field oscillations over here. So I can just assume a particular tiny region over here, and I can construct that tiny region like this. That's a tiny region, and in that particular region I can study the amount of the energy contained. So that will be something like the energy contained in that particular volume. So I can restrict that volume to a smaller size and start talking about the term as a du upon dv, जिसको मैं define करूंगा as a term as a energy density, as the energy contained in the small unit volume. और फिर मैं बोलूंगा कि भाई देखो ऐसा है कि मैं उस वॉल्यूम को ज़्यादा ले लेता हूँ तो उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी कंटेंट हो जाएगी. उसके लिए मुझे बताना पड़ेगा कि जो एनर्जी डेंसिटी है वो कांस्टेंट है. तो भाई देखो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी से. सो द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, इसको हम यू ई लिख लेते हैं.
दैट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, स्मॉल यू लिखा है मैंने, तो एनर्जी डेंसिटी को हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं. दिस इज इक्विवेलेंट टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट स्क्वायर, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. दैट्स एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी. और अगर हम यही बात करते हैं फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, दैट इज सपोज टू बी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट. दैट्स एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी. इसमें ई और बी जो है दे आर रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिकल वेव एंड द मैग्नेटिक वेव. तो ई वेव को हम कैसे लिख सकते हैं, ई नॉट साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, एज्यूमिंग द वेव इज प्रोपगेटिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. और सिमिलरली बी को कैसे लिख सकते हैं, एज इक्वल टू बी नॉट साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी. तो अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन लिखें, सो दैट बिकम्स हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई को स्क्वायर करके लिख लेते हैं एज ई नॉट स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे b को स्क्वायर करके लिख लें, तो नीचे तो ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट है, न्यूमरेटर में इट बिकम्स बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ऑफ ओमेगा टी. Now the values for these keeps on changing, है ना, because it's a sine function, it's a square of the sine function. So the value keep on changing. So there might be the regions where you will find instantaneously at a particular position at a particular time that you are having the electrical component zero, and any particular position, any particular time, you can find that there is a maximum value for the energy carried by the EM wave with that tiny region. So what do we do? So there are some regions in which you are finding null energy, somewhere you are finding maximum energy. So we try to actually take the average of it. तो अगर हम इसका एवरेज कंसीडर करें तो साइन स्क्वायर फंक्शन का एवरेज हाफ होता है. So if I write this expression in the terms of the average terms, so I can easily write that electrical energy average density will be equal to 1 upon 4 epsilon E naught square, क्योंकि साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी एवरेज वैल्यू में हाफ यूज कर रहा हूं. एंड ऑन द सिमिलर नोट, अगर मैं मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की एवरेज वैल्यू को कंसीडर करता हूं, सो वंस अगेन आई हैव अ फैक्टर ऑफ हाफ कमिंग फ्रॉम हेयर, जिसकी वजह से इस एक्सप्रेशन को मैं बी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 ऑफ म्यू नॉट लिख सकता हूं. Now the challenge for me is that क्या ये दोनों एनर्जी सेम है? देखने से तो नहीं लग पा रहा है, but let's try to attempt, let's like to try to attempt कि अगर मैं इलेक्ट्रिकल एवरेज डेंसिटी का एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, that is 1 upon 4 epsilon naught E naught square, थ्रू द मैक्सवेल इक्वेशन मुझे एक रिजल्ट पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, दिस इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट. इसका मतलब I can substitute the E naught value as equal to C into B naught. मतलब एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन है बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक एम्पलीट्यूड्स. सो मैं इसको लिख सकता हूँ एज 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू बी नॉट स्क्वायर एंड इनटू सी स्क्वायर. फिर एक और मैक्सवेल इक्वेशन सॉल्यूशन से, सेट ऑफ इक्वेशन से मुझे ये पता है कि C की वैल्यू 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है. इसका मतलब ये जो C स्क्वायर यहाँ पर है, मैं इसको सब्स्टिट्यूट करके लिख सकता हूँ. कहां से? फ्रॉम द एक्सप्रेशन फ्रॉम हेयर, दैट स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर करके अगर मैं इसको लिखूंगा, सो दैट बिकम्स 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. स्क्वायर करा है मैंने, तो भाई कुछ कैंसिल वैंसल तो नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है. दैट एप्सिलॉन नॉट गेट्स कैंसल्ड एंड टू माय नॉलेज. नॉलेज मतलब मेरे लिए कोई ये अचंभित तो होने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही ऐसा सोच रहा था कि मैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों बोल रहा हूँ. मतलब क्या इसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक जो कैरेक्टर है वो बराबर है, तभी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल रहे हैं. नहीं तो ज्यादा इलेक्ट्रिकल होती कम मैग्नेटिक होती है, कम इलेक्ट्रिकल या ज्यादा मैग्नेटिक होती है, ऐसा नहीं है. व्हाट दिस एक्सप्रेशन गिव्स मी द नॉलेज इज कि अगर आप इलेक्ट्रिकल एवरेज एनर्जी डेंसिटी चेक कर रहे हैं, दिस इज अल्टीमेटली कमिंग इक्विवेलेंट टू द मैग्नेटिक एवरेज डेंसिटी, जिसको मैंने लास्ट सेशन में, जिसने नहीं देखा है वो जाके देखे उस पर्टिकुलर सेशन को. उसमें एलसी सर्किट में कुछ टाइम इंस्टेंट पे ऐसा दिखाया था कि जहां पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और जो मैग्नेटिक एनर्जी है क्रॉस अ कैपेसिटर एंड इंडक्टर, वो सेम प्रोपोर्शंस में होती है. इन द केस ऑफ द ईएम वेव, वी कैन कमेंट ऑन एन एवरेज the electrical energy carried by the EM wave is equivalent to the magnetic energy carried by the EM wave. That's absolutely correct. In fact, watch this, that this particular term ultimately is going to be equal to this particular term.
यही बात तो हमने यहां से प्रूफ करी है, that epsilon naught E naught square is coming as B naught square by mu naught. इसका मतलब the instantaneous values of both the energy densities are exactly the same. एवरेज भी सेम है और इंस्टेंटेनियस वैल्यूज भी सेम आ रही है, ये बात हमने पहले भी समझाई थी. दे आर प्रोपोगेटिंग इन फेज. एक्सेलेंट. तो इसका मतलब अगर मुझसे कोई पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल एनर्जी डेंसिटी कैरिड बाय द ईएम वेव, तो मैं उसको यू एवरेज से डिनोट कर लेता हूं. दैट्स एवरेज एनर्जी डेंसिटी कैरिड बाय ईएम वेव is the sum total of the electrical average density carried by the EM wave plus the magnetic average density carried by the EM wave. और अगर मैं इन दोनों को एड अप कर लेता हूं यहां पे, so what I am able to get? I'm able to write first of all this as 1 upon 4 epsilon naught E naught square and plus B naught square upon 4 of mu naught. बट टू माई अचीवमेंट, जो कि मैंने अभी अभी प्रूव करा कि ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के बराबर हैं, सो आई कैन राइट दिस एज इक्वल टू as twice of 1 upon 4 epsilon naught E naught square, which is nothing but as equal to half of epsilon naught E naught square, which means if I am writing the average energy density carried by the EM wave, I can write the expression as half epsilon naught E naught square, which is also equivalent to as V naught square upon twice of mu naught. That's the average energy density carried by the EM wave with the equal proportions of electrical energy density and the magnetic energy density. Now, when this particular wave falls on a particular surface, it exerts a pressure on that particular surface, which means this wave carries power, so it has got intensity. So I'm going to focus upon the intensity of the EM wave. EM wave strong hai ya weak hai. So how do I actually write the expression of the intensity? Intensity is written as equal to energy per unit time upon area. तो अब इसको obtain करने के लिए I am going to sketch once again what I sketched just now, कि मेरे पास ये अगर x डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है, so this is going to be the electrical oscillations and simultaneously there is the magnetic oscillations also. एंड सिंस अब मुझे एनर्जी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पता है, जिसके लिए मुझे क्या करना था, मुझे एक एलिमेंट्री वॉल्यूम को यहाँ पे क्रिएट करना था. सो लेट्स से आई हैव क्रिएटेड दिस एलिमेंट्री वॉल्यूम ओवर हियर इन द गिवन रीजन. तो भाई गिवन रीजन तो बड़ा भी हो सकता है ना, तो मैंने उसके अंदर से अपना एक एलिमेंट्री रीजन निकाला है और फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एनर्जी डेंसिटी को एज डी यू अपॉन डी वी. दैट्स अ एनर्जी डेंसिटी इन दैट पर्टिकुलर रीजन. अब ये वॉल्यूम जो है यहाँ पे वो कैसे मुझे मिला उसके बारे में सोचते हैं. तो उसके बारे में कैसे सोचे कि हमने ऐसा सोचा कि ये जो एनर्जी है जो अभी मान लो यहाँ पे थी, ये कुछ समय के बाद जो है वो एनर्जी जो है वो प्रोपगेट करके आगे पहुंच गई यहाँ पे. इसका मतलब dt सेकेंड्स में ये जो एनर्जी है वो यहाँ तक पहुंच गई. इसका मतलब ये जो एनर्जी थी dt सेकेंड्स में इतने वॉल्यूम के अंदर कंटेन्ड थी. और वो एनर्जी किस फॉर्म में है उसका विजुअल आपको राइट साइड डायग्राम से दिख रहा है. दैट्स एन ईएम वेव एनर्जी ओवर देयर. एक्सेलेंट. तो इसका जो एरिया है उसको मैं ए एज्यूम कर लेता हूं इस पर्टिकुलर रीजन का, और ईएम वेव को मैं वैक्यूम में मान रहा हूं. तो जो वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है तो उसकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है. तो dt seconds में the distance it has traveled is supposed to be c into dt, which explains the volume of this particular region. Elementary volume of this particular region will be equal to area into length. So that's a into that length, और length किसके बराबर आ रही है, that is c into dt. अंडरस्टूड है ना कि जितनी एनर्जी है वो किस स्पीड से ट्रैवल करी है, c से dt सेकेंड्स में वो एनर्जी इस सरफेस से अगले सरफेस पे पहुंच गई. सो द वॉल्यूम in which this energy was contained for the dt seconds, that is dv. एक्सेलेंट हो गया. तो हमें dv की वैल्यू मिल गई. अब मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है अबाउट द इंटेंसिटी. अब मैं इंटेंसिटी को कैसे लिखूं, दैट्स अ एनर्जी. सो एनर्जी को मैं यूजुअली u से लिख लूंगा अपॉन द टाइम. सो टाइम को t से लिख लूंगा, एरिया को a से लिख लूंगा. सो कैन आई राइट दिस पर्टिकुलर टर्म एज इक्वल टू du एंड आई कैन राइट दिस एज dt. तो मैं इसको लिख सकता हूं एज डी यू
अपॉन dt इंटू सी इंटू ए एंड इंटू सी। क्या करा है मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने बस ऊपर नीचे सी से मल्टीप्लाई कर लिया है। पर ऐसा करने से मेरा फायदा है कि जो नीचे वाली टर्म है दैट इज सी ए डी टी, उसकी वैल्यू जो है वो एलिमेंट्री वॉल्यूम के बराबर है, विच मीन्स आई कैन रिड्यूस दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन एज डी यू डिवाइडेड बाई जो पूरा डिनोमिनेटर है वो आपका डी वी के बराबर हो गया है, और दैट डी यू अपॉन डी वी इंटू सी। और ये जो डी यू अपॉन डी वी है दैट इज नथिंग बट द energy density, that's the energy density and into C। तो अगर आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखना चाहते हैं एनर्जी डेंसिटी की वो भी लिख सकते हैं, और अगर आप एवरेज वैल्यू लिखना चाहते हैं तो आप उसको भी लिख सकते हैं। सो दैट एवरेज इंटेंसिटी carried by the EM wave will be equal to U average into C, that's the average energy density carried by the EM wave। अब वो हमने लास्ट स्लाइड में अच्छे से कैलकुलेट करी है, दैट यू एवरेज दैट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी कैरिड, सो द एनर्जी डेंसिटी कैरिड बाय द ईएम वेव, ये पूरी ईएम वेव के लिए है, दैट वाज कमिंग एज अ टोटल फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल एवरेज डेंसिटी प्लस द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, और हमने उसका सम टोटल डिराइव करा है एज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर और बी नॉट स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट। Hence, this particular expression is the average intensity of the EM wave is equal to the average energy density carried by the EM wave, जिसको हम लिख सकते हैं half epsilon naught E naught square into C. So that becomes the expression of the average intensity. And you can also write this as equal to B naught square upon twice of mu naught into C. ऐसे भी लिख सकते हैं। See, you can also anytime write the expressions, क्योंकि देखो जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल वेव है वो ई नॉट साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी है, ठीक है ना। तो एक वेरिंग फंक्शन है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वेव जो है दैट इज बेसिकली चेंजिंग इस वैल्यू टाइम एंड अगेन, और वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू है, तो हम यहाँ पे आरएमएस वैल्यू को भी यूज कर सकते हैं। It means if I'm going to use a RMS value, so what is the value for the ERMS equal to? That is equal to E naught upon root 2. And if I write a value for the BRMS, that becomes equal to B naught upon root 2. तो अगर मैं इस तरीके से एक्सप्रेशन को यूज करूं, so I can also write this particular expression जो कि मैंने यहाँ पे डिराइव करा है as equal to epsilon naught into E square RMS, because E naught square by 2 can be written as equal to E square RMS. So this into C, and is equivalent to as equal to B square RMS upon mu naught into C. So that's an expression over here. So that's the intensity carried by this. So lastly, for the today's session, I'm going to discuss about the pointing vector and the importance of the pointing vector. Pointing vector को मैं S से denote कर रहा हूँ, and this S vector is written as equal to 1 upon mu naught into E cross B. Now the good thing about this particular vector is कि अगर मैं इसका direction check करूं, the direction of this particular vector explains the direction of the propagation of the EM wave. So that's the first reason for basically defining the pointing vector, that it explains to us the direction of the propagation of the wave by its direction. मतलब basically E cross B को अगर आप देखोगे right hand curl rule से या screw rule से, so you will be able to find out the direction of the EM wave. ये पहला सिग्निफिकेंस है। द सेकंड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इज दैट इज पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं, तो इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे सो दैट इज गोइंग टू बी एज इक्वल टू ई इंटू बी अपॉन म्यू नॉट। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो क्यों लिख सकता हूं? बिकॉज आई नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ई क्रॉस बी को मैं ई बी साइन 90 लिख सकता हूं, और फिर मैं यहाँ पे यूज अप कर सकता हूँ दैट E and B can have the relation through the C. Or further, E को मैं कैसे लिखूं? So when I'm writing the E, that is supposed to be as E naught upon root 2. And when I'm writing the B, so that is equal to B naught upon root 2. मतलब RMS values हैं. So that means that becomes as E naught upon root 2 and B naught upon root 2 and divided by mu naught. So that's E naught B naught upon 2 mu naught first of all.
और फिर अगर मैं रिलेशन यूज करूं दैट द स्पीड ऑफ द लाइट कैन बी डिफाइंड एज इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट, तो यहां से ई नॉट की वैल्यू को मैं सी बी नॉट लिख सकता हूं. सो दिस एक्सप्रेशन बिकम्स एज सी बी नॉट इंटू बी नॉट upon twice of mu naught, which works as equal to b naught square upon twice of mu naught and into c, and this particular term completely can be written as equal to u average into c, and the u average into c जो term है completely, this is nothing but the average intensity carried by the EM wave. So that's the second significance of the pointing vector, कि उसका जो magnitude है that represents the intensity of the EM wave. So 2 point significance of the pointing vector is not a pointing POIN नहीं है, POYN है. The first significance is that it provides the direction of the propagation of the EM wave. The S cap or the S vector is the direction of the EM wave propagation. और अगर आप उसका magnitude check करते हो, so that is going to give you the average intensity of the EM wave. So these are the main characteristic properties of the propagation of the EM waves. We talked a lot about the EM wave in the today's session and focus upon the main region. मेन रीजन इन द सेंस कि भाई देखो, जो एवरेज एनर्जी है इलेक्ट्रिकल वेव की और मैग्नेटिक वेव की बराबर के प्रोपोर्शन में है. हालांकि जो ई नॉट और बी नॉट है दे आर नॉट ऑफ द सेम प्रोपोर्शन. देखो, जो ई नॉट है वो सी टाइम्स ऑफ बी नॉट है, मतलब 3 × 10⁸ टाइम्स ऑफ बी नॉट जो है ई नॉट है. तो यहां से किसी को लग सकता था कि नहीं, ई नॉट और बी नॉट जो है वो सेम प्रोपोर्शन में नहीं है, लेकिन जब हमने एनर्जी का प्रोपोर्शन चेक करा तो एनर्जी का प्रोपोर्शन दोनों का सेम आ रहा है. एंड सो वी कैन इजिली से वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन इक्वल प्रोपोर्शंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.